Om Dhanvantare Namah. Uh, Respected dignitaries on the dais and off the dais, in fact off the dais I can see more of my gurus who was hai medicinal plants in Ganga basin, but there was a sub theme relating to food consumption. So I thought ki it will be a good time to talk about this subject because द्रव्यगुण से आहार अलग नहीं है. द्रव्यगुण में औषध और आहार दोनों का ही डिस्क्रिप्शन है. औषध पे हमारा फोकस रहता है, रहना चाहिए, पर साथ साथ अगर हम आहार की बात करें जो हमारे सभी शास्त्रों के अंदर डाइट प्लानिंग बताई गई है इन ईच एंड एवरी डिजीज़, हाउ टू एनालाइज दैट. तो दिस इज़ द वर्क दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट. ये एक थीसिस वर्क है, मेरा अपना थीसिस वर्क है, वेयर वी ट्राई टू कोरिलेट the diet that has been told in different Samhitas, different texts of Ayurveda with the modern science. Is there any relevance to it? क्योंकि कई बार हम लोग हमारे स्टूडेंट टाइम में हम लोग सोचते हैं कि लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, ओके इसको ऐसा मगअप कर लो, एग्ज़ाम में लिख दो एंड देन फॉरगेट इट. और फिर उसके बाद केवल अगर डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ इज़ जस्ट अ प्रोटोटाइप हेयर. डायबिटीज़ की बात करें तो उसके अंदर हम बोलेंगे कि आज जो शुगर जिसमें नहीं होना चाहिए, आलू नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना, कर देते हैं. दैट्स इट. कि जो शुगर इंक्रीजिंग विल फाइंड दैट क्वालिटेटिवली ज़रूरत है बस उसे समझने की और उसको आत्मसात करके नए उन प्रिंसिपल्स को नए पर्सपेक्टिव में नए टाइम के अंदर उनको ढालने की. सो ये एक छोटा सा प्रयास है. जो दिस वॉज द लिटरेरी वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमिक रिव्यूज़ ऑफ मैनी अदर रिसर्च वर्क्स. द्रव्यों के ऊपर काम किया था. एंड इनकम है हमारे पास, तो हम इसको जो इनफैक्ट दी वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ नाउअडेज, प्रेवलेंस 422 मिलियंस इन 2014 तो ऑलरेडी थे हम लोग, बट 2000 तरह का हमारा लाइफस्टाइल है उस तरह से बढ़ रहा है. इंडेक्स की बात होती है, ग्लाइसेमिक लोड की बात होती है, कैलोरी काउंटिंग की बात होती है. देन कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप्स कैसा होगा, प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी जानी चाहिए आइडियली, कार्बोहाइड्रेट्स कौन से टाइप के होने चाहिए, मोनो कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, पॉलीहाइड्रेट्स को सुखी रखे और साथ में मन पका के खिलाया के अनुसार आप उसको संस्कारित कर सकते हैं. उस पर डिपेंड करता है कि एक ही फूड जो है वो किसी ये सारे जो पैरामीटर्स है, ये सारे जो अष्टाहारविद विशेषायतन के पैरामीटर्स हैं, इनके अकॉर्डिंग ये पथ्य भी हो सकता है और वही चीज़ अपथ्य भी हो सकता है. सो कमिंग टू प्रमेय में पथ्य विचार क्या बताया आयुर्वेद के अंदर, चरक के अंदर, सुश्रुत के अंदर, और फिर और लेटर टेक्स्ट ने जो अष्टांग ने और चिकित्सा शास्त्र है उन सब ने चरक सुश्रुत को फॉलो करके कंपाइल किया है. कौन से शुग दाने कार से खाना है तो उसको भून के खाना है, कैसे उसको प्राप्त करना, या जौ को उसमें से प्राप्त करना, पुरुष में से गाय के पुरुष. इंगुदी, दंती, इनके तेल शास्त्र में बताए गए हैं और हमने जब इस पर कुछ वर्क करने की कोशिश करी, सर्च करने की कोशिश करी, वी डिडंट डू एनी वर्क ऑन दिस, बट सर्च करा तो मिला कि इनके अंदर ऐसे प्रिंसिपल्स मिलते हैं जो एंटी डायबिटिक एक्शन कर सकते हैं. और दुनिया के कुछ कंट्रीज़ में जैसे इंगुदी, मिडिल ईस्ट में उसका तेल आज भी खाया जाता है. दंती के विषय में कोई ऐसा नहीं मिले, कुछ रेफरेंसेस नहीं मिले, लेकिन इंगुदी के बारे में मिला कि वो वहाँ पे खाया जाता है. इट इज़ रिच इन ओमेगा 3 ऑल्सो. जैसे आपका अलसी का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ओमेगा 3 ओमेगा 6 का रेशियो बहुत फाइन रहता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है. तो इट इज़ अल्टीमेटली बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स. फिर जैसे मैंने बोला अभी कि इन जो अन्न द्रव्य हैं, शुग धान्य वर्ग हैं, इनके द्रव्यों को भून के खाना. देन पूरे मांस का पूरा डिस्क्रिप्शन आता है कि किस प्रकार का लघु मांस खाना चाहिए. वसा से रहित मांस जितना बताया गया है वो सारे ऐसे एनिमल्स का और बर्ड्स का नाम लिखा हुआ है जिनमें फैट्स की क्वांटिटी कम रहती है और प्रोटीन की क्वालिटी और क्वांटिटी ज़्यादा रहती है. उनको भी शलाका पर भून के खाने का विधान है. उनको डीप फ्राई नहीं करना है, उन्हें केवल रोस्ट करना है. ये बहुत स्पेसिफिकली बताया हुआ है. विभिन्न प्रकार की दालों के बारे में बताया है कि वो दालें विकल्प से लेनी है आपको. जो 4-5 प्रकार की दालें हैं, आगे हम अभी इसको काउंट करेंगे, तो 4-5 प्रकार की जो लघु रूक्ष दालें हैं उन्हें लेना है और उन्हें भी किस प्रकार से खाना है उसका डिस्क्रिप्शन है. केवल दालों का नाम मात्र छोड़ के ही नहीं छोड़ दिया गया, उनको विकल्प से लेना है टू इंक्रीज दी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी, अमीनो एसिड्स इन द बॉडी. विकल्प से चेंज कर करके कभी कुछ दाल खाया, कभी सेकंड टाइम दूसरी दाल खाया, तो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बॉडी के अंदर पहुंचे, इसलिए उन्होंने विकल्प से उसको दाल को लेने का बताया है.
यही चीज़ों को सुश्रुत ने भी अपने शास्त्र के अंदर बताया, एज यू कैन सी देयर। सो दीज आर दी कंपाइलेशन, जो अगर हम बात करें तो डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर शुभ धान्य के अंदर यव, गोधूम, शाली, षष्टिक, केवल शाली और षष्टिक धान का बताते हैं कि शाली और षष्टिक धान को ही लेना है, ब्रीही लंबा जो चावल होता है उसे नहीं लेना है। और ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो है जिनमें से अभी बहुत सारी अनआइडेंटिफाइड हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के चावल हैं, मे बी जल्दी कुक होने वाले चावल होंगे या अब नहीं मिलते होंगे, या मिलते भी होंगे तो उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनको उन्होंने अपथ्य के रूप में रखा हुआ है। तृण धान्य या फिर जिसे हम आजकल मिलेट्स के रूप में जानते हैं, सारे मिलेट्स को उन्होंने पथ्य के रूप में डायबिटीज़ के अंदर बताया गया, और बहुत साइंटिफिक उसके ऊपर एविडेंसेस हमें आज मिल रहे हैं कि दे आर बेनिफिशियल फॉर दिस टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। देन शाक वर्ग, बहुत स्पेसिफिकली शाक वर्ग के अंदर तिक्त और कषाय वर्ग के जो शाक हैं उनका डिस्क्रिप्शन मिलता है। जो कॉमनली हम लोग आज खा रहे हैं, कुछ ऐसे शाक हैं और कुछ ऐसे शाक हैं जो मेडिसिनल हम लोग यूज़ करते हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग इट एज शाक या सब्जी बनाने के लिए, साग बनाने के लिए घर पे हम उसको नॉर्मली यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, व्हेन यू गो टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, इन केरला या इन नॉर्थ ईस्ट, यू विल फाइंड दैट पीपल, ट्राइब्स या फिर लोकल पीपल आर स्टिल कंज्यूमिंग दोज मेडिसिन। अभी भी आपको मिलेगा कि मंडूक पर्णी को किसी साग के फॉर्म में खाया जा रहा है कई स्थानों पर, यहाँ पे नहीं है, या सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में नहीं है, लेकिन ये सारे द्रव्य जो है वो अभी भी कंज्यूम हो रहे हैं। यू विल, अभी जो थूअर का पत्ता होता है, दैट इज़ ऑल्सो टेकन एज लीफी वेजिटेबल इन दिस पर्टिकुलर सीजन इन राजस्थान। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं या फिर लोकल पॉपुलेशन है जो अभी भी पुराने प्रकार के शाक को अभी भी खा रहे हैं। देन इसके अंदर अगर हम संख्या इसमें गिने, अगर किसी तिक्त शाक कौन कौन सा है, तो पटोल, शोभांजन का फल, वी ऑल टेक इट। कंटकारी फल हम नहीं खाते हैं, लेकिन कंटकारी फल की गणना है तिक्त फल के अंदर शाक के रूप में बना के खाने की। कटिल्लक, करकोटक, उदुम्बर फल, लहसुन, नवीन मोचक, वार्ताक, पत्तूर शाक, ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। देन फल, जो फल नॉर्मली जो खाते हैं मीठे फल, वो सब आज जो चल रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर, बिकॉज ऑफ द टेस्ट, वो फलों का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता, लेकिन ऐसे फल जो तिक्त हों, जो कषाय हों, उनको खाने का विधान बताया है, विशेष रूप से आमल की सभी जान रहे हैं। कपित्त का फल भी खाने के लिए बताया गया। तिंदुक का फल, जम्बू हम लोग ले रहे हैं, जम्बू, खदिर फल, अश्मंतक के फल, इन सब के जो फल हैं वो जो वाइल्ड फ्रूट्स हैं उनको उन्होंने बोला कि ये पेशेंट ऑफ डायबिटीज़, जो पेशेंट ऑफ मधुमेह, वो खा सकता है। फिर मांस में जांगल मांस लेना है, उसमें हरण का मांस, शशक मांस, ये सारे मांस, बहुत बृहद डिस्क्रिप्शन मिलता है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी शास्त्र के अंदर, आप सब जानते हैं। तो उसमें से जो फीजिबल मांस जो हम लोग खा सकते हैं आज की डेट में, या लोग खाते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर, हरिण का मांस इट मे बी कॉन्ट्रोवर्शियल, बट हम उसमें से सोचें कि कई लोग खाते हैं तो दौड़ता बहुत तेज़ है। लघु गुड़ का युक्त मांस होता है, उसके अंदर फैट का क्वांटिटी बहुत कम रहती है, दैट्स वाई हरिण का मांस, या हरिण के जैसे और एनिमल्स जिनकी दौड़ बहुत तेज होती है, वो अच्छा मांस माना जा सकता है आयुर्वेद के अंदर। देन डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स आर ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड। तेल मैंने पहले बताया, जो 4 प्रकार के तेल बताए गए हैं उनका, और दुग्ध के अंदर हम तक्र का सेवन जो है वो सही माना जाता है डायबिटीज़ के अंदर। फिर उसके अलावा और संतर्पण हेतु मद्य का प्रयोग, खजूर का प्रयोग, नारियल का प्रयोग, या ताल के डिफरेंट पार्ट्स, ताल का मस्तक है उसका डिफरेंट पार्ट्स का प्रयोग, देन सेंधव, मरीच, ये सब जो है वो पथ्य के रूप में डिस्क्राइब किया हुआ है शास्त्र के अंदर। सो इन जो पूरी लिस्ट है उसके अंदर हमें जब और एनालिसिस करा तो हमने देखा कि ये कुछ तो द्रव्य हैं जो लाइन से डिस्क्राइब किए अभी, उसके अलावा कुछ भाव हैं जिनको फॉलो करें तो वो भाव जो है वो डायबिटीज़ में बेनिफिशियल है। लाइक कौन से रस का द्रव्य होने चाहिए, मेनली तिक्त और कषाय के, गुड़ में लघु और रुक्ष, और दोष जो है वो कफ, मेद, शामक प्रॉपर्टी से युक्त वो द्रव्य होंगे, तभी वो बेनिफिशियल होंगे। एक एक हमने कोशिश की थी कि एक एक द्रव्य का डिस्क्रिप्शन करें, और किया भी हमने, और रिसर्च वर्क भी की है, डिफरेंट रिसर्च एविडेंसेस एक्यूमुलेट किए, इकट्ठा किया, और फिर एक रिसर्च पे उस पर हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचे थे। तो गोधूम के ऊपर भी एंटी डायबिटिक रिसर्च हो चुकी है। मेनली यव को बताया गया है कि जो यव है दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़। तो यव के ऊपर तो अतः वर्क हुआ है, बहुत सारा वर्क हुआ है, वो भी हम आगे देखते हैं। देन देयर वाज द प्रिंसिपल ऑफ नवीन एंड पुराण,
जो मैं बताया आपको कि हमने कंपाइलेशन तो किया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद में इसको हमने करने की कोशिश करी। नवीन और पुराण का जो कॉन्सेप्ट जो आता है इन शुभ धान्य एज वेल एज मधु, गुड़, इन सब के अंदर आता है। तो जो रिसर्च कह रही थी कि इनके अंदर एमाइलोज टू एमाइलोपेक्टिन जो रेशो है स्टार्च के टाइप्स है, दैट चेंजेस। जो नवीन जो अन्न है उसके अंदर उसकी आउटर लेयर बहुत थिन होती है, इट कुक्स अप ईजिली और बहुत जल्दी उसके सेल्स ब्रेकअप होते हैं, स्टार्च बहुत जल्दी बॉडी के अंदर फैलता है, तो इट इंक्रीजेज दी ग्लाइसीमिया इन ह्यूमन ब्लड। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा होता है नवीन का। और जो पुराण हो जाता है 1 साल या 2 साल जो पुराण होता है उसको रख के प्रॉपर तरीके से उसको हीट में रख के उसको पुराण किया जाता है और उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है। तो इसी पे हमने एक अभी लास्ट ईयर थीसिस कंप्लीट करी इसके अंदर कि एक चावल को हमने नया और पुराना करके उसी पर्टिकुलर बैच का चावल हमने रख के पुराना किया, उसको प्रॉपर उड़ीसा से चावल को हमने इंपोर्ट किया और किया उसको। तो वी फाउंड कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ कम होता है। कुकिंग पैटर्न में डिफरेंस होता है, कुक करने में हम उसको देखें तो जो नवीन जो है वो बहुत जल्दी स्प्रेडअप होता है और बहुत जल्दी टूटता है बहुत जल्दी, तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो उतनी ज़्यादा कम नहीं थी पुराण से। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस नहीं है, पर मे बी डेली कंजम्पशन के अंदर बॉडी के अंदर जाने पे वो उस प्रकार के रिजल्ट्स शो करता है। और इसके अलावा भी नवीन और पुराण के अलावा भी केवल चावल खाने का विधान कहीं पे नहीं है, षष्टिकशाली को खाने का विधान नहीं है, उसे कॉम्बिनेशन डाइट्स में लेना है अलॉन्ग विद दाल चावल। जो हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन डाइट्स हैं जो हम नॉर्मली घर में खाते हैं बिना जाने केवल टेस्ट की वजह से कि इसको अरहर की दाल के साथ खा लेते हैं, आज मूंग की दाल के साथ खा लेते हैं या मसूर के साथ खा लेते हैं, ये ट्रेडिशन में आ चुका है। क्योंकि लेकिन प्रिंसिपल ये आयुर्वेद का ही प्रिंसिपल है, जो कार्बोहाइड्रेट्स या जो फ्री कार्बोहाइड्रेट फ्री स्टार्च है या फिर फास्ट डिजॉल्विंग स्टार्च है बॉडी के अंदर, उसको एब्जॉर्प्शन को कम करने में दाल के प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। या फिर शायद बिहार की तरफ या और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में सब्जी के साथ मिला के चावल को खाया जाता है और उसमें भी तिक्त शाक की औषधियों को लिया जाता है। तो वो रीज़न यही है कि चावल के साथ में टेस्ट के अपार्ट में, लेकिन चावल की जो बहुत जल्दी बॉडी के अंदर जाके शुगर को इंक्रीज़ करने की टेंडेंसी है उसको वो कम कर पाए, एब्जॉर्प्शन को कम कर पाए, इसलिए उसके पीछे ये रीज़न मिलते हैं। मैंने बताया कि एमाइलोज टू एमाइलोपेक्टिन का जो रेशो है वो नवीन और पुराण के अंदर डिफरेंस रहता है और उसी डिफरेंस की वजह से नवीन और पुराण चावल का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो चेंजेस, माइनर चेंजेस हैं, वो उस वजह से आते हैं। मधुमेह के आहार में धान के साथ विभिन्न प्रकार के मुद्ग आदि यूश को खाने का जो हम लोग ट्रेडिशन में आ चुका है वो इसलिए खाया जाता है। और तिक्त शाक के अंदर भी थोड़ा सा देसी घी डाल के खाने का विधान है, जिससे वो उसकी रूक्षता बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। और तिक्त शाक के अंदर विशेष रूप से जो प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी शमी धान्य के अंदर आड़की बोला गया है, अरहर, मकुष्ट, कुलथ, चणक, मसूर और मुद्ग, इन सब का बताया गया है कि ये सारी दालें जो है वो बेनिफिशियल हैं फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़। कषाय रस से गुण युक्त हैं, लघु गुण से युक्त हैं और कफ शामक हैं। विकल्प से लेने से जैसा मैंने पहले बोला कि डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स उनकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि दाल बहुत अच्छा सोर्स एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड या मीट से जो प्रोटीन्स मिलते हैं उसके कंपैरेटिव में थोड़ा सा कमतर होता है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ दाल अगर पेशेंट्स को बोला जाए दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं उनके लिए। देन दाल के अंदर एक एंटी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, टेनिन्स मिलते हैं, और जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं दीज हेल्प इन ग्रीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगे। शामक, निवार, कंगुनी, जून, और ये पहाड़ों में हमारे विशेष रूप से इनमें से कई सारे जो मिलेट्स हैं, राजस्थान के ट्राइब्स हैं वो बहुत सारे मिलेट्स हैं आज भी प्रचलन में हैं। मोटा अनाज जिसे बोलते हैं वो मोटा अनाज भी खाया जाता है और दे आर फ्री फ्रॉम मैनी टाइप ऑफ डिजीज टिल नाउ। वेणु यव विशेष रूप से इसका भी बताया गया है कि वेणु यव जो बांस में जब फ्रूटिंग होती है और जिसके बाद बांस ख़त्म हो जाता है, वो उस यव के लिए भी या उस फ्रूटिंग के लिए भी, चावल के लिए भी शास्त्र में बताया गया और इस पर भी रिसर्च हुई है। सीड्स पे रिसर्च होना बाकी है, इसके फ्रूट्स के ऊपर ही रिसर्च होना बाकी है, और ये एक आगे के लिए टॉपिक्स हो सकते हैं कि उसके ऊपर रिसर्च कराएं, एंटी डायबिटिक प्रिंसिपल्स उन पर रैट मॉडल में करके देखें या ह्यूमन ट्रायल के अंदर करके देखें। ये रिसर्च अभी एरिया बाकी है।
देन डिफरेंट टाइप ऑफ मांस जो वसा से, जिसमें वसा रहित हो या वसा कम मात्रा में हो, जो एक्टिव एनिमल्स होंगे, एक्टिव बर्ड्स होंगे, एनिमल्स होंगे, उसके अंदर वसा की मात्रा नेचुरल कंडीशन में कम रहेगी, तो ऐसा जो होगा वो मांस रस डायबिटीज़ के या मधुमेह के पेशेंट के लिए हितकारी रहेगा। और ऐसा मांस रस को भी डीप फ्राई नहीं करना है या उसको तलना नहीं है, वो सब केवल शलाका में भून के खाने का ही विधान है, तभी वो बेनिफिशियल ज़्यादा होगा। तेल में 4 प्रकार के तेल हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशो इनमें चारों में परफेक्ट रेशो लगता है कि रहेगा, क्योंकि दंती पे काम नहीं हुआ है लेकिन बाकी तीनों पे काम हुआ है, तो वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो बेनिफिशियल रेशो है उसमें ये पूर्ति करता है। अगेन तिक्त शाक जो हमने काउंटिंग की थी, डिफरेंट टाइप ऑफ तिक्त शाक के अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे भी रहेंगे। इनके एल्कलॉइड्स कुछ ऐसे रहेंगे जो तिक्त एल्कलॉइड्स तिक्त रहते हैं, वो एल्कलॉइड्स जो हैं वो एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर पहुँचा रहे हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के अंदर ड्यू टू इंक्रीज यूरिनेशन और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जहाँ मल्टीविटामिन दे रहे हैं, तो वहाँ पे तिक्त शाक वर्ग के द्रव्य और मिलेट्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर रहा है। फल वर्ग में भी यही कंडीशन है, एंटीऑक्सीडेंट्स विशेष रूप से सभी के अंदर देखे गए, एंटी डायबिटिक प्रिंसिपल्स इनके अंदर आमलकी के अंदर विशेष रूप से वर्क हुए हैं, आमलकी पे सभी जान रहे हैं, तो आमलकी पे वर्क हुए हैं, एंड देन बाकी पे जम्बू पे हुआ, जम्बू सीड्स पे विशेष रूप से वर्क हुए हैं, तिक्त हैं, कषाय हैं, इसलिए इनका सेवन एंटी डायबिटिक या मधुमेह शमन के लिए इनका प्रयोग करने का विधान है। मधु पे भी बोला जाता है कि मधु जो है वो अगर वाइल्ड हनी है, दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स ऑफ मधुमेह। इस मधु को कभी भी एंटी डायबिटिक नहीं बोला गया, हाँ संतर्पण क्रिएट करने के लिए मधु का यूज़ करना बताया गया है। संतर्पण मीन्स एनर्जी गिविंग सब्सटेंस के रूप में। इट वॉज फाउंड, इट इज़ नोन टू एवरीबडी कि इसके अंदर जो शुगर है दैट इज़ फ्रक्टोज, एंड फ्रक्टोज ऐसा शुगर है जिसको इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती बॉडी के सेल्स में प्रवेश करने के लिए। जब बॉडी के अंदर जब डायबिटीज़ पेशेंट को है तो इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, इंसुलिन की क्वांटिटी कम है या रेजिस्टेंस इंसुलिन डेवलप हो चुका है, तो शुगर जो है बॉडी के अंदर होते हुए भी डीप सेल्स तक नहीं जा पाती बिकॉज इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड देयर। तो यहाँ पर फ्रक्टोज अगर पेशेंट किसी फॉर्म में लेता है जो शहद के अंदर मिलता है अबेंडेंटली, वो फ्रक्टोज जो हुआ वो बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है, बट फ्रॉम दिस वी कैन नॉट से कि मधु जो है वो बहुत बेनिफिशियल है फॉर द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़। आज के एविडेंसेस ऐसा नहीं बोलते, बस फ्रक्टोज का एक एविडेंस है कि एनर्जी गिविंग सब्सटेंस के रूप में ठीक है, बट नॉट फॉर द क्योर ऑफ डायबिटीज़, कि पेशेंट उस पर स्विच कर जाए कि शहद चीनी नहीं खानी है, शहद खाना है। इट इज़ नॉट द राइट वे। मधु उदक बना के पी सकता है, फैट को डिजॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मधु उदक के रूप में, या थोड़ा मात्रा में मधु का प्रयोग कर सकते हैं, वो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस के रूप में यूज़ करें। देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ पुराण एंड नवीन मधु, इस पर भी कार्य करवाया हमने, 2 थीसिस इस पर करवाई थी। अनफॉर्चुनेटली मधु के बारे में मैं इसलिए ओपनली बोल रहा हूँ कि नहीं यूज़ करना है। अनफॉर्चुनेटली मधु जितना भी हमने लिया कहीं से ही परचेज़ करके लिया या फिर कलेक्ट करके भी लिया, इनफैक्ट अपनी आंखों के सामने से कलेक्ट करके लिया, वो मधु भी फाइनली टेस्ट में फेल हो जाता है। एक मार्क के जो टेस्ट आते हैं उसके अंदर टेस्ट में फ्री शुगर उसके अंदर आ रहा है। दिस मे बी ड्यू टू दी कल्टीवेशन ऑफ शहद का भी कल्टीवेशन हो रहा है, मधुमक्खी को चाशनी खिला के और फिर छोड़ा जाता है, तो वो भी हो रहा है, तो उसके अंदर भी आपको शहद ओरिजिनल मिलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो बोथ ऑफ दिस वर्क फेल्ड ड्यू टू दिस रीज़न कि वो लास्ट में वो शहद ओरिजिनल नहीं पाया गया। नवीन किया, पुराण किया, बहुत माइनर चेंजेस आए, नो डेफिनेट रिजल्ट्स वर फाउंड। सो दिस वॉज इट। वी ऑल्सो ट्राई टू पुट इनसाइड, ये जितना हमने सारे द्रव्य लिए उसको आहार विधि, अष्ट आहार विधि विशेषायतन के जो 8 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की थी। सो जैसे प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था और उपयोक्ता, ये 8 जो विशेष आयतन है, इनके अंदर ये एक एग्जाम्पल के रूप में डायबिटीज़ को प्रस्तुत किया गया है कि जो 8 फैक्टर्स हमें देखने हैं तो वो किस प्रकार से देखें।
डायबिटीज़ एज अ प्रोटोटाइप, तो प्रकृति जो आहार की होने वाली है, आहार की प्रकृति यहाँ पे जो होगी वो तिक्त, कषाय, लघु, रूक्ष, गुड़ से युक्त आहार होगा, वो एंटी डायबिटिक या मधुमेह शमन वाला हम बोलेंगे इसके अंदर। करण क्या, उसके अंदर संस्कार क्या करने होंगे, अग्निभृष्ट करना होगा या शूल पे पकाया हुआ है, शुष्क द्रव्य, मांस, इस तरह का जो है वो उसका रोस्टिंग जो होगी, दैट विल बी द मेन संस्कार देयर। संयोग क्या करा सकते हैं शाली षष्टिक को, जैसे दाल के साथ में, चावल के साथ में दाल डाला या तिक्त शाक की औषधियाँ डाली, तो दिस विल बी द संयोग हेयर। राशि डायबिटीज़ का पेशेंट जो मॉडर्न डायबिटीज़ बोलते हैं कि 5 बार दिन में खाएं, छोटी छोटी डाइट्स खाएं, और हमारे यहाँ राशि के बारे में बोला जाता है स्पेसिफिकली, तो बोलते हैं कि दिन में 2 बार भोजन करते हैं, या फिर मेन क्या है हमारा कि जीर्ण होने पर ही भोजन करना है। तो कम मात्रा में खा रहा है और वो जीर्ण हो रहा है और दोबारा खा रहा है तो इट्स ओके, लेकिन उसकी अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। अग्नि सही है तो वो बार बार भले ही खाए, अपनी अग्नि को शमन करने के लिए जीर्ण होने की अपेक्षा रखता है। सम मात्रा, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सम मात्रा में ही उसे भोजन करना है। देश के अनुसार जांगल मांस का प्रयोग करना है और अल्प मेद युक्त मांस का प्रयोग करना है। और काल अगर देखा जाए तो जो द्रव्य है वो पुराण शाली षष्टिक का या पुराण मधु का जो है वो उपयोग करना बताया गया है। तो इस प्रकार से अष्ट आहार विधि विशेषायतन जो है वो इसके अंदर बिल्कुल सही बैठता है। जो हमारे जो प्रिंसिपल सेटअप किए गए अष्ट आहार विधि विशेषायतन और सारी हमारी जो डाइट के पैटर्न है उस पर हम इस प्रकार से उसको याद रखने के लिए ईजी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि ये क्या क्या इसके अंदर फैक्टर्स हमें डाइट फॉर्मुलेशन के वक्त याद रखना है। सो निष्कर्ष यही है कि हमारा जो शास्त्र है वो प्रिंसिपल्स आज भी इंटैक्ट हैं। उन प्रिंसिपल्स को समझने की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस भी हम समझा सकते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर ओन साइंस भी उन्हें हमें आत्मसात होना चाहिए। तो यही निष्कर्ष थीसिस में निकल के आया। मॉडर्न साइंस की हमें हेल्प बिल्कुल लेनी है। मॉडर्न साइंस बहुत स्पेसिफिकली और क्वांटिटेटिवली बहुत आगे बढ़ा है। इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ फैट्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना डाइट प्लान अगर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़, डायबिटीज़ जैसी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उन सब के अंदर करें तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। सो थैंक यू ऑल फॉर पेशेंट लिसनिंग। इफ़ यू हैव सम क्वेरी यू कैन ऑलवेज आस्क मी, आई एम सिटिंग हियर ओनली। I would also like to thank the organizers of this beautiful seminar for inviting me here to address the students and all the august gathering sitting over here. Special thanks to Professor D.C. Singh sir and all my colleagues sitting here. Thank you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया करतल ध्वनि से सर को धन्यवाद देंगे। सर ने डायबिटीज़ के संदर्भ में आयुर्वेदिक डाइट प्लान क्या होना चाहिए उसके बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा की। सर ने बताया कि डाइट प्लान का जो बेसिस होना चाहिए वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, प्रोटीन कंजप्शन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन, इन सब का ध्यान रखते हुए डाइट प्लान बनाया जाना चाहिए। सर ने आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पंचभौतिक थ्योरी, पथ्य अपथ्य वर्णन, अन्नपान विधि, अष्ट आहार विधि विशेषायतन, त्रिविध विपाक, इन सब के बारे में बताया। और सर ने यह भी बताया कि डाइट प्लान का जो अनुरूप होना चाहिए वो इस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारण। तो वे फैक्टर्स हमें कम से कम यूज़ करने चाहिए जो कि प्रमेह को बढ़ा सकते हैं। सर ने पथ्य के विचार के अंतर्गत शूक धान्य, शमी धान्य और प्रमेय चिकित्सा, चरक चिकित्सा में 6 चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी आचार्यों में विस्तृत वर्णन है उनका एक कंपाइलेशन भी हमें दिया। और सर ने उन्हीं श्रेणी में पथ्य और उसी श्रेणी के अपथ्य, उन सब के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। मेन कॉन्सेप्ट सर ने बताया कि लघु और रूक्ष प्रॉपर्टीज़ वाले द्रव्य, उस तरह की पल्स, दाल, ये सारी चीज़ें हमारे लिए डायबिटीज़ के रोगियों के लिए लाभदायक है। और साथ ही ऐसे ड्रग्स जो कि मधुर विपाक से संबंधित हैं जैसे यवक, हायनक या जो गुरु हैं वो सब अपथ्य हैं। फलों की चर्चा करते हुए सर ने तिक्त कषाय रस वाले फल जैसे आंवला, कपित, जम्बू, खदिर, इनको पथ्य के रूप में डायबिटीज़ में लेने के लिए हमें बताया। मांस रस के ऊपर सर ने चर्चा करते हुए बताया कि वह
पशु या पक्षी जो लघु और चल गुणयुक्त हैं, उन जिनमें फैट कंटेंट कम है, उनका मांस हम यूज़ कराया जा सकता है मधुमेह के रोगियों में। साथ ही सर ने नवीन और पुराण अन्न की कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम सबको बताया। सर ने एक स्टार्च रेशियो चेंजेस के बारे में भी बताया कि नवीन और पुराण अन्न में इस बेसिस पे हम किस तरह से डायबिटीज़ में यूज़ किया जा सकता है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बिहाइंड जो भी कॉन्सेप्ट है, साइंस है, उसका हमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया। साथ ही सर ने शहद के बारे में भी चर्चा की, जिसमें सर ने बताया कि फ्रक्टोज़ होने के कारण वो हमारे लिए डायबिटीज़ के रोग में उतना हानिकारक नहीं है, बट फिर भी लिमिटेड यूज़ ही करना चाहिए, इसलिए क्योंकि प्योर फॉर्म मिलना बहुत मुश्किल है। सर ने बताया कि वेरियस स्टडीज़ सर के अंडर में हुई, जिसमें कि कलेक्टेड हनी और इवन कल्टिवेटेड हनी भी यूज़ किया गया, लेकिन वो भी टेस्ट में पास नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अडल्ट्रेशन था। तो मैं आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हम सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए। इसी क्रम में सर को सम्मानित करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी रिस्पेक्टेड मीना आहूजा मैम को और रिस्पेक्टेड सुरेश चौबे सर को कि कृपया वे मंच पर आकर हमारे सर को सम्मानित करें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैम से और सर से कि कृपया वह आदरणीय सुबित नैठानी सर को फेलिसिटेट करेंगे, करतल ध्वनि से सर का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे स्पीकर्स में हमारे बीच प्रोफेसर राकेश भूटानी सर, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से उपस्थित हो चुके हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। करतल ध्वनि से सर का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सेकंड साइंटिफिक सेशन के दूसरे कीनोट स्पीकर आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय सर, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार से मैं उन सर का स्वागत करना चाहूँगी और आप सभी से अनुरोध करूँगी कि कृपया आप सभी एक बिग ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज के द्वारा सर का स्वागत करेंगे। सर वाइस प्रेसिडेंट ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं। सर इज़ Season's drug discovery and development profession with 22 years of research. He is PhD from Bangalore and he has postdoctorate from USA. He has MBA from New Delhi. Sir is also fellow of Royal Society of Biology, UK. Patanjali से पहले Dr. Varshney sir has worked in different capacity at Marine Biological Laboratory at Ranbaxy Research Lab. He has driven more than 50 diverse research themes. I welcome you, sir, and I request you to please come on the podium to present. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. I'll just connect it through. Thank you, folks. Can we see this now? इसको नीचे कर दी, बंद कर दीजिए। इसको बंद कर दीजिए। नहीं नहीं ये Good afternoon, everyone. I am actually an odd one out here. I see a lot of bright faces, a lot of learned faces in Ayurveda. There are big professors, and I'm still a student of Ayurveda.
I am basically a biomedical scientist trying to learn Ayurvedic concepts and trying to apply the mode of actions, trying to understand how these drugs would work if they goes inside our body. So I would like to, of course, thank organizers for calling me here and giving me opportunity to address you and trying to show that what kind of work we are doing at PRI. My regards to all the dignitaries on the dais and off the dais, and I hope in next 25 minutes or so, I would be able to take you through the type of research we have been conducting at Patanjali Research Institute. In the time allotted to me, I will try to give you an introduction to PRI. It's a newer institute which is just 5 years old, and lots of you may not be knowing about it. So I think it's a right opportunity to talk about the institute where I work. And in the next 15 or 20 minutes or so, if my time permit, I will take you through the journey that we have been working on Ashwagandha and how different part of Ashwagandha plant can be utilized for various medicinal uses. So to introduce PRI, by the way, my name is Anurag Varshney, as you can see there, and I lead the research functions at Patanjali Research Institute. To introduce PRI, this is an institution which have been blessed by Param Shraddha Swamiji and Param Puj Acharji, and I really appreciate the kind of support, help and blessings we get from them day-to-day basis. The center was set up in 2017 and was inaugurated by our beloved Prime Minister Shri Modi ji. These laboratories actually are one of the ultra-modern kind for Ayurveda, which have been set up to bridge the gap between the modern practice and our ancient medicinal knowledge. This is probably one of the only kind, literally state of the art, to conduct the research in Ayurveda and Yoga. Top of the line equipments, globally trained workforce, energize the research operations on a daily basis. The mission for Patanjali Research Institute is to actually improve the health and quality of life through research and innovation. And we have a vision to reach there. We already have, I think you guys know better than I do, that we have a large unstructured Ayurvedic and herbal information. We just saw one in detail from the previous speaker. And then we have a rich history of medicinal plant. We want to funnel all of that through the old wisdom, modern practice, scope of delivery, multi-pronged approach, and in the end we want to reach towards a very well characterized Ayurvedic herbal medicine which would be scientifically validatable and would have an evidence-based medicinal system. So that would mean that we would be able to talk about Ayurveda beyond the national boundaries of India or Indian subcontinent. Our strategy has been in 4 ways. We want to go for, we initiated, we transitioned, we went towards actualization, and our ultimate goal is towards excellence, gaining an universal acceptance of Ayurveda. At this moment, we are right now focusing towards actualization, and I'll get my cursor so that easy to connect with me. Just 1 minute. Here. So right now we are at the actualization stage. We have energized workforce, ignited thoughts, and quality dependent delivery. And if we look at the brief history of time of PRI, it started from 2010 by the formation of a research foundation, and which we moved ahead and had a fantastic journey from 2017 onwards. And for last 2 years, we have been rather busy. We have set up a huge degree of collaboration, have been publishing very extensively in very great journals, and from last 20 months or so, our team has published close to 60 large impact factor journals and talked about how the drugs work and how the mode of action goes through it. Now, if you look at the research strength and accreditations at Patanjali, so when you talk about research laboratories, there are basic degree of accreditation that you really work with and the type of infrastructure that is available. And I'm very proud and happy to show that at PRI, at Patanjali Research Institute, we have 3 laboratories which are accredited with NABL. Our laboratories are accredited with DSIR, ISRO. Close to 300 scientists works there, several PhDs and postdocs with global experiences. We have a full-fledged registered animal house, which is governed by Institutional Animal Ethics Committee. Our research labs are in the compliance for biosafety level 2, and we have a dedicated clean and dirty corridors. We have Institutional Ethics Committee for clinical trials. We have an Ayurvedic hospital, which is, of course, the blessings to have it together, close to 250 bed hospital, and then an
Ayurvedic Medical College, and close to 1,500 medical doctors on roster with a daily footfall of 15,000 patients across India, and which makes things in a very complete and complex as well. So if you look at the total segmentation that we have for PRI, we have 5 major segments. One is the drug discovery development, second is the painting and herbarium, then we have ancient documentation, we have yoga research, and we have herbal research. Other than these 5, we get support from our other auxiliary unit as well. Now in drug discovery, what kind of work we do and how we drive our work. So on your left hand side, you see a glimpse of our infrastructure. All the modern equipments and technologies required for conducting research are available at PRI. I also invite all of you who are interested to visit, please come by and see how do we work, what we do, and how we reach our targets. Equipments are the only one way to go forward. That's not really correct. We need to have the mind and body behind it. So we have a very large pool of dedicated scientists who actually do the work. So once you come by, you would be able to connect it well as well. So total 5 segments are there in drug discovery and development. In vitro biology, that means the work that you do with the human cells or animal cells. In vivo biology, where you do the experiment with the animals, which we do in animal house. Herbal chemistry, where we try to purify a different kind of herbal compounds. Microbiology, where we work with bacteria, fungus, and virus. And clinical research, when we start to look at the effect of those drugs on human patients. So all 5 of them get linked together, and we get blessing from Acharji on day-to-day basis. Now, if you need to do a drug discovery, which means that you're looking for new drugs and you want to see how they really work, you can devise the whole thing in 2 ways. One, that you can go by the different kind of formulation, which I'm sure you guys know better than I do, that you have different churn, different tablets, different ASAV and ARIST, and you try to find out which disease they may be useful for. Second way would be that we pick up a disease and try to find out what we can fill into it. At PRI, we try to go for the second approach, what we call disease-driven approach, and we bucket the whole diseases in 5 bigger segments: inflammation, metabolic disorders, cancer, neuroscience, and infectious diseases. And the diseases are mentioned on the right-hand side, and these are the number of the total drug formulation we have tested so far in our laboratories. And total outcome from there has been that we develop new formulation. We have validated them in very detail. Few of them are on your screen. Some of them you already know. Coronil is one of them, which was actually developed at Patanjali Research Institute. And in together we have in total 52 new medicines which have been developed by PRI in last 20 months or so. And these are few more photos that I clicked from my office window because I had those bottles lined up there. And once we do these kind of research, we go ahead and we publish them very extensively. So each team has a good publication record, and I've got few copies just to show you. This is from cancer research. This is from phytochemical characterizations. And again, if you see, I think PRI has been privileged to show that on a cover page of a research journal, which is a high impact factor journal, PRI got this privilege to have it first time any Ayurvedic medicines. The first one was the Coronil that came on the cover page of Journal of Separation Science, and later we had Mahayogaraj Google that also came on the same journal cover page. So that actually takes the science that we practice towards a global acceptance. Clinical research team published extensively too. And then in infectious diseases, these are just the front pages of all the papers that we have published. And inflammation is our cup of tea, and we do this very extensively. So these are just some summaries. Now we come towards the main part. So all of you know pretty well about Ashwagandha, and I learnt as well in last 3.5 years with Patanjali that this is of course a wonder plant. It's a popular herbal ingredient, and it has been used extensively for various diseases. But most of you also know that we use Ashwagandha roots. So the roots are the classical medicines. It has been described in many texts, and they have been used extensively. But when we talk about drug discovery, that means that you need to discover more drugs. You have to find new uses or additional uses of a same composition. That's how modern science does it. That's what I have been doing it before I came to Patanjali. I came from a pharma industry where my job was to find new drugs and try to find the mode of action and take it towards clinics. So the 2 molecules that I work with, they're right now in the clinical trial phase 3, and I feel happy about it.
In Ayurveda, how do we do it? In Ayurveda, if you look into it, for last 200 years or so, there have not been a new report for any new formulations. We have been working on the same formulations which have been described by our ancient sages, and we said those are the best way to forward. We agree, of course, those were the best one. But as the science advances, it becomes imperative that we look for additional thing. We need to find what more we could do, because learning never stops. And unless we practice this, we cannot take things forward. So one of the area where Ayurveda need to move forward, which we belong very strongly, to identify new formulations, new medicines, or a different part of a known medicine. And the classic case here is ashwagandha, where ashwagandha root have been used throughout. However, there is no reference for ashwagandha leaves or ashwagandha seeds or ashwagandha flowers. Nature also make them, right? There has to be something into it. So my team thought that, okay, let's try to investigate what we can do and how those components or how those other parts of ashwagandha can be utilized for various diseases. So from next point from here, maybe next 15 odd slides, I'll try to take you very thoroughly, very quickly towards the scientific evidences we have generated for ashwagandha leaves and ashwagandha seeds. And of course, this conference is all about looking for the Ganga basin plants, and I'm very happy to research and found that ashwagandha, Withania somnifera, grows very well on the Ganga basin. And there is a research report which have been published by the consortium of 7 IITs, and I saw a copy of that was published in 2012, which talks about the diversity of ashwagandha against those basins. So I thought this would be a nice model to talk about today among you. Now, if you look at here, if you look at on the left hand side, you're looking at the raw materials which we did for our experiment. Here you see the total amount of extraction process that we want to do. These are the end product, and these are the validated medicinal effects. So first we talk about the whole plant, which is predominantly leaves in it. Roots, all of you already know it, which we have validated that it has a very new anti-peritonitis effect. I'm not going to talk about today because you guys all know about it. I chose to talk about whole plant and the seeds. And regarding seeds, I think Patanjali Research Institute is a pioneer one to look for the medicinal value of the seeds. We found that seeds are full of very healthy fatty acids. And we just learnt about the fatty acids, that those are also useful. So we did a lot of work on those, and in next few slides I'll go very quickly and try to explain that to you. Now, if you look at the whole plant, we could do a hydromethanolic extraction. That means you can enrich the total chemical component present in those leaves and could actually generate an extract which could be enriched for a given phytochemical. This research happened during the COVID time. This research happened just before Coronil was launched. We found that there is a compound in ashwagandha called Vidinone, which is present in the root and is also present in lots of amount in the leaves. It's actually critical to inhibit the interaction of the SARS-CoV-2 virus with the human host cells. Now, if the Vidinone is a critical one, we found it through doing in silico modeling, then we need to have the compound with us. And we chose to work with the whole plant extract of ashwagandha and could actually purify that compound up to 85% purity. And the compound name is Vidinone. And the enriched extract we call Winwise, which is with Vidinone enriched Withania somnifera extract. Now, when we do this experiment, let me go very quickly with this. So how does the COVID virus work? I think most of us now know it very well, that it has a spike protein on the outer coat of the virus. The spike protein interacts with the ACE2 receptor in our human cells. So the entry of the virus happens when this gate gets crashed up. That means the spike protein interact with ACE2 and the engagement happen. That's a time the virus shakes hand with our host cells. So if we can break that handshaking process, we would be able to control the viral entry. And that was the basic model in 2019. And so far it still exists with some more addition to it. But that was the basic model, that if you can control that interaction, if you can control the protein to protein interaction, can you control the viral entry on that? So the team that is there in PRI at that moment did a very extensive molecular modeling in silico experiment and molecular dynamic simulations, and they could find that Vidinone, the compound which you see in the green color here, this pink part is the ACE2 protein, which is coming from our host cells, lung cells, and RBD is a
receptor binding domain of the spike protein that interacts together. Vidinon actually decreases that interaction. We then went ahead and did an experimentation in biochemistry labs or PRI, where we could see that if you come with a good amount of Vidinon, you can break down this interaction in a dose-dependent manner. With the IC50 to like close to 300 nanogram per ml. That shows that even a lower concentration, that interaction can be broken. And if that happens, can we take this forward? Can we take this Vidinon forward as a drug which can control the COVID virus spread? And this is the chemistry. Herbal chemistry and analytical chemistry is our core competency. Our team does this work fantastically, and I'm very proud of them. Here what you see the HPLC data, which is high performance liquid chromatography, and the peak that you see here, this is the purified compound, and this is a commercially synthetic compound, and we could find that Vidinon was present in this ashwagandha extract up to 85% purity, while everything else looks very silent. Now from there, we went to then go ahead and see that this really works the way we expect that to work. But to test this, that is really going to affect the COVID virus, there is a lot of challenges. The first thing you really want to do to have an animal model. That means you develop an either rat or mice or guinea pigs or rabbits which can be infected by COVID virus. But the thing is that somehow God has made this way that rats and mice, they are immune to COVID virus. That means that if virus attacks them, they do not get infected. They do not develop any disease etiology. And that becomes a challenge for most of the biologists who want to work COVID virus research. So the challenge was, okay, let's do some other organism. And these experiments were happening in 2019 during the lockdown time, where the accessibility of the reagent, accessibility of the animals, and even conducting research was almost impossible because we could not really move it out. So that there was very challenging time. Then we chose to do that. How about we go towards zebrafish? Zebrafish is a very small fish of like this size, which has a swim bladder, a air sac, which is used by the fish to go up and down in the water. It changes the buoyancy of the fish. So since it's the air sac, that means it's a sort of analog to the lungs that we have. So if we can use our human lung cells and inject them inside the air sac of that fish, and we can make them grow there, we might have an humanized zebrafish. So that was the first challenge, and we tried doing that. And you see on the screen, this is the fish and these are the human lung cells called A549 cells, which we grow in our laboratory. We could actually inject them and get them home in. All the circles that you see, this part here, this is a single cell coming from human lungs which are growing very well inside the swim bladder of the fish. So now what we have, that there is an acceptability of this new cell inside the body of a fish. That means now we have a xenotransplanted humanized fish model which now would behave at least with the lung functions within that fish. So the thing was, now we can take the SARS-CoV-2 spike protein which causes inflammation inside that fish. And if that works out, it would start showing a response of an inflammatory syndrome, what really happens during COVID. So that was the whole gamut of plan of experimentation we did. There were a lot of variables, but the one that worked was this, that we could actually induce SARS-CoV-2-like system, what is seen inside the human patients was observed the same way in a fish which was having a human cells. Now, once these models are available with us, then it becomes easier for us to test Vidinon or ashwagandha whole plant extract, and we could actually test it very well. We could see the behavior of fever. Since fish is a cold-blooded animal, it's not easy to measure the fever of a fish or the body temperature of it. So we designed a new boxes where we can have the fish move as per the body temperature, and we could find once the fever is induced by the spike protein could get reversed by the ashwagandha whole plant extract, and we could do this in a dose-dependent manner. And we really found that this indeed shows that ashwagandha whole plant extract has the chemicals which can control COVID virus entry inside the cells. This we end up publishing it into a very high impact fact journal called Drug Design, Development and Therapy, which came in the press in 2019 itself. Now I think my computer is stuck, it's not moving it forward. Oh, it did. All right, so that
That is there. The title itself says that Vidinone from Vidania somnifera attenuate SARS-CoV-2 RBD and host ACE2 interaction to rescue spike protein-induced pathologies in humanized zebrafish model. So that was our first success with other plant part of ashwagandha other than root. Second, we move very quickly towards the seeds. So the seeds are full of oil, and how do you extract the oil? You can mill them together, or you can use hexane to extract them. We chose something slightly fancier. We chose liquid carbon dioxide, what we call them supercritical fluid extraction. That means you take the carbon dioxide, you put it at a very low temperature and very high pressure. So the gas becomes liquid. Now in that liquid, if you pass through the powder of the seed, all the oil component will get dissolved in that liquid. You filter it out and release the gas, decrease the pressure. Gas will evaporate and whatever the extract would be left with you. And that is called supercritical fluid extract. We did that from ashwagandha seed. And we are very happy to see the seeds have close to 16% of oil, which we were really not expecting that. But that was a very good quality oil. Oily component of ashwagandha seed was seen, and we could test that in the two independent model. One for the microbiology, where we could see it has an antimicrobial and antibiofilm activity against Salmonella enterica, and second we could do an anti-psoriatic effect. That means it could actually take care of skin inflammation. So first I'll talk to you about anti-psoriatic effect. But before we do all of those test article a very detailed chemical characterizations. So we found the total amount of oils and the fatty acids present there. We found that ashwagandha seed oil is rich in linoleic acid. It has a good quality oleic acid and other kind of fatty acid that you see on the screen. And now these oil does not have any signature ashwagandha root compound. Ashwagandha root compounds are called vithinoloids, which are there in the root, and close to 5% are there in most of the roots. When we tested this in ashwagandha seed oil, we found that oil doesn't have any of those vithinoloids. Largely, it's a mixture of a very good quality fatty acids. So that would mean that those fatty acids would be fantastic treatment option for various skin diseases where inflammation happens. And we chose psoriasis. So this data what you see is in vitro biology data, where we took the human cells, these are human monocytic cells, which are the primary inflammatory cells, and we could see that this extract or this oil from ashwagandha seed was safe up to 10 microgram per ml concentration. And when we given any dose lesser than 10, we could control the different cytokine signaling. Cytokines are the molecule which causes inflammatory response. TNF alpha, IL-6 and NF-kappa B. All three of them can be reduced by the ashwagandha seed oil in a dose dependent manner, which you could see very beautifully here. And then we moved ahead and looked for the skin cells, human skin cells, and we could see the similar kind of response were there, that the induced cytokines was decreased in a time dependent and dose dependent manner. That will make us happy, and we chose, okay, now let's move towards animal experiment. So we have a fantastic animal house and a very dedicated team which could develop the various disease model as per the requirement. So team chose to set up a model for psoriasis, which is a skin inflammatory disease, and there is a compound called TPA which you apply topically on the ears of the mice. They develop a psoriatic-like lesions. The thickness of ears get big, and you get to see different kind of inflammatory response. You see inflammatory cells moving in at the site of injury. So this is just a treatment plan. But what we could also find that when we looked for the edema, the what you call in Hindi, sujan, kaan ki sujan. So that edema get decreased by ashwagandha seed oil in a dose dependent manner. In parallel, we ran an steroid which is used in modern medicine, dexamethasone. Most of you would be knowing it. Dexamethasone also did the same thing. This is disease phenotype, this is normal phenotype, this is with dexamethasone, and these are two doses of WSSO, ashwagandha seed oil, and you could see it actually decreases. Similarly, when we look for the ear thickness, the total amount of MPOs, and also the total percentage change from the basal, we could find that the effect of this oil was comparable to a steroid, which was a big thing, because that is one thing we never expect.
that we might have an herbal origin drug which could compete with an steroid for a pathophysiological control. So that was a very good finding. So we take it from there and we did detailed histopathology, where we take out the ear tissue and look for the changes at the level of different pathological markers, and could score them and could see the same kind of trend that yes, indeed, the ashwagandha seed oil was comparable to dexamethasone for most of the target that we looked for. We went ahead and published this in Biomolecules in 2020, where we could show this oil indeed has a fantastic effect. Then the second effect I talked about, antimicrobiological effect. So where we looked for as enterica, where we could see that it does inhibit the growth of it in a dose dependent manner. We could see the total amount of bacteria that is growing get inhibited by close to 5 milligram per ml concentration of this oil. And it actually disrupt the bacterial wall, so we know the mode of action for this. In addition, it also kills the biofilm which is formed by this bacteria in a dose dependent manner too. So again, these findings have been published, and those of you who are interested can actually go through that. 2 minutes. This is published in Phytomedicine, and I come for the last and important part. When we talked about a new medication, the first response comes, since it's not used for several centuries, how do you know the drug is safe? So we did a detailed GLP toxicity, where we take the whole plant extract of ashwagandha leaves, and then we found it that it's actually safe. We went up to 28 days dosing in rats under OECD guideline, and we went up to 1000 milligram per kg, which is close to 20 times of the human dose, and we found that drug has no effect at all that could be seen as a toxicity marker, which has been published in Nature Scientific Reports 2 months back. And these are just the finding that there is no change in the body weight gain, there is no change in the total amount of food that they eat. And when you look for different organs of an animal, so we harvest almost each and every organ, and we could then do a detailed histopathology and find that there is no gross pathological changes in any of those animals which has given so much high dose of the drug. So here I come to my summary, that in order to move ahead, it is very important that we take risk. Risk appetite is the first trait our drug discovery person need to have. So we chose to take that risk, move towards ashwagandha, and try to find that there are possibilities of looking at different part of the same plant, which is known to be a wonderful plant. So these we have shown that in vitro, in vivo, in silico, in all possibility, ashwagandha leaves and seeds has medicinal properties, and they are safe for human consumption. And we have submitted all of these reports to Ayush Ministry, because there was some guideline that came from Ministry, I think 6-7 months before, that since leaves are not described in text, they should not be used as a medicinal product. So our team has taken that decision that let's compile all the data, and that we have sent to them, and we are hoping to hear back from them. And we are also hoping that these kind of research will also open up the world that ashwagandha roots are in high demand and they are not enough supply. So there is a big gap between supply and demand. If we can show that the leaves are also useful, seeds are also useful, we may be able to fulfill that gap between the demand and supply. And that may be the way forward we are looking forward. So thank you very much. You have been a fantastic audience. If there are any queries, please feel free to ask. I'll be very happy to answer. Thank you. Any questions? Any queries from anyone? Students, I think if you have any query, even the smallest one, please ask. And trust me, there is no question that's a bad question and a low question. I made my whole career asking those stupid questions only. So if you have a question, please ask. No one? Okay, good. Thank you. Oh, there is one. Yes, ma'am. You need to wait louder. Thank you, sir. The session was very useful. I would like to know what is the procedure to visit the Just walk in. walking? Yeah, walk in. Walk in and ask that you want to see the laboratories. There will be someone to help you. Okay, thank you so much, sir. No problem.
All right, folks? Thank you. And all yours. Thank you. Thank you. This you will need it. This you needed, ma'am? I'll take my computer back. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच सर. प्लीज़ गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. गंगा बेसिन प्लांट्स में अश्वगंधा के ऊपर सर का लेक्चर बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा. सर ने हम लोगों के साथ अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी स्टडीज़ शेयर की. सर ने सबसे पहले पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक ग्लिम्स दी, बहुत सारे पिक्स दिए. सर ने बताया कि इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी क्लिनिकल ट्रायल के लिए. उसके अलावा सर ने ड्रग डेवलपमेंट और डिस्कवरी से रिलेटेड 5 सेगमेंट्स के बारे में हम लोगों को बताया, जिसमें सर ने इन विवो बायोलॉजी, इन विट्रो बायोलॉजी, हर्बल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च आदि सेगमेंट्स के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया. सर ने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स जो कि बहुत ही रिनाउंड जर्नल्स में प्रकाशित हैं उसके बारे में भी सर ने बताया. स्पेशली कार्सिनोमा रिसर्च पेपर जो कि सर ने बताया कि कोरोनिल और योगराज गुगलू के ऊपर एक कवर पेज पे इसको स्पेस मिली, जो कि रियली ये शो करता है कि ग्लोबल एक्सेप्टेंस है आयुर्वेद का. थैंक यू सर, इतनी अच्छी चीज़ें सारी आपने शेयर करी हम लोगों के साथ. सर ने अश्वगंधा के बारे में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि हम लोग अश्वगंधा मूल के बारे में रिसर्च करते रहते हैं, लेकिन उसके अदर प्लांट्स लाइक सीड्स, लीफ और फ्लावर्स के बारे में और क्या उनके वेरियस यूजेस हो सकते हैं उसके बारे में सर ने बहुत ही डिटेल में हम लोगों का ज्ञानवर्धन किया. थैंक यू वेरी मच सर. सर ने बताया कि विदेनोन जो उसमें कंटेंट है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रूट्स में ही है, वो लीफ में भी है और वो कोरोना वायरस में यूज़फुल है. सर ने कुछ स्टडीज़ के द्वारा हमें ये भी जानकारी बढ़ाई हमारी कि जो सेल्स के साथ इंटरेक्शन होता है वायरस की स्पाइक्स का, वो कंट्रोल करा जा सकता है अगर हम उसके ऑयल, अश्वगंधा के ऑयल या सीड ऑयल को यूज़ करते हैं. थैंक यू वेरी मच सर फॉर ऑल दिस एनहांसिंग आवर नॉलेज. थैंक यू सर. के फेलिसिटेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आदरणीय माधवी गोस्वामी मैम एवं आदरणीय सुमन मिश्रा मैम से कि कृपया वे मंच पर आकर सर को सम्मानित करें. थैंक यू मैम. Summarize it beautifully. Thank you. That means you're listening very much. सर मैं मैम से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया मैम आराम से. करतल ध्वनि से आप सर का अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद देंगे. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. इसी क्रम में सर कृपया मैं इस सेशन के अगले स्पीकर डॉक्टर धनराज आजी सर, जो कि प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा पतंजलि हरिद्वार से हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया सर पोडियम पर आकर अपना वक्तव्य देकर हमें अनुग्रहित करें. सर के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ. सर ऑल इंडिया टॉपर रहे हैं पीजी सिलेक्शन एनआईए जयपुर के लिस्ट में. उसके अलावा सर ने सर्टिफिकेट को रिसीव्ड अ स्पेशल सर्टिफिकेट फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए. Sir has completed masters from England. Sir is also topper in inter-school competition of government-sponsored UN Model Assembly. He has secured first prize silver trophy in national seminar competition held at NIA Jaipur. Sir has attended several seminars, paper presentation as delegate, as chairperson, and he has also organized several conferences. Sir also worked with WHO in several countries like Uganda, Ethiopia. Sir is also a clinical auditor in England. Sir has prepared international health program proposal for USAID, European Union. Sir has so many published scientific papers and he has guided PhD and MD students in Cancer Research Institute. Sir has received Best Teacher Award from Hyderabad and received British Award for International Academic Excellence. I welcome you, sir, and I cordially invite you to the podium to give your lecture. Thank you, sir.
Om. Good afternoon, everybody. First, my respects to my Pujya Swami Ramdev ji and Reverend Acharya ji, who are the instrumental to bring me down on this podium here now. I sincerely pay my respect to him. And then, as honorable guests on the dash, esteemed faculty members, Principal Ayurvedic College, Patanjali, Dr. Anil Adav, and professors, students, and my dear brothers and sisters. Yeah, it's an immense pleasure for me to give this presentation. It's a bit intense. At the outset, I know I am time limit, all are feeling hungry. I'll definitely finish as planned. 20 minutes was given to me. 20 minutes, 5 minutes plus or minus international rule. Okay. Yes. So, yeah. This is not moving. Excuse me, not moving. Frozen. My laptop. Yeah, thank you. So, everybody know the prayojanam of Ayurveda. I think most of them, I don't have to tell. Lakshana of Ayurveda, no. Types of diabetes mellitus, type 1, type 2, and the review and reasons of selecting each herbal. The thing is, what I wanted is actually the Ganga basin has got several herbs. And what best we can give as a public health specialist, I find that diabetes is one of the major diseases for which the subcontinent is an hub. So the subcontinent includes India, Pakistan, Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh, etc., the whole of the South Asia. So this is out of which India has the highest number of population, and we are the biggest hub of diabetes. So I feel that what best can be chosen from the Ganga basin for these diabetes people. So it is a big gift for the people of the Ganga to see that this particular medicine, which has undergone a series of investigation and research, and formulated this particular formula for the people of Ganga basin. Yes. And so we have this totally 10 herbs: Guduchi, Madhusnuhi, Madhunashini, Haridra, Nimbag, Jambu, Karvelaka, Ashwagandha, Amalaki, Vibhitaki, Haritaki. This is a combination, and today is the first stage where I am revealing this combination. And this is the Guduchi plant, and a lot of research has been done. The reason for choosing is, see, you can see Bushi et al. Has proved as hepatoprotective and immunomodulatory effect. Stanley et al., hypoglycemic effect. Stanley et al. Again, hypolipidemic effect. And Purandare, diabetic foot ulcer. And Rati S et al., Rajalakshmi et al., Kinkaran and Shobha et al., and Sachidananda, all up for hypoglycemic effect. So next is we have this Madhunashini, Gudmar. We have this, and this is Gymnea sylvestris, and for which you know that it's called as Gudmar because once you put it in the mouth, it is tasteless. The sugar becomes tasteless because it anesthetizes with a special molecule that is a gurmarin. Works on the same way, interfering the tongue's capacity to distinguish between the sweet and the bitter taste. So, and we have the hypoglycemic effect for this, and also for gymnic acid, which has got a glycolysis effect. And we have some more studies, that is Shenmugam, etc., and controlling the hyperglycemia and the reverse pathological alterations established in the liver during the hyperglycemia. And Sunita Sharon also shared with 4 times more than insulin. 4 times more than insulin, this Gurmar. So the above research works included the polyherbal drug basically stimulates the beta cells, likely or may be regenerated or repaired. This particular point I want to stress because the death of the beta cells here, we have some special herbal drug which could really regenerate and repair. So I put in the combination and used it. And this is the Haridra, Kurkuma Langa, and again we have got so many hypoglycemic drug, and also the what Charaka says that the prashasta dravya for prameha is Haridra. So I chosen this, and the Nimba, this is also found here very vastly, and it also got a hypoglycemic effect, and also Jambu has also got the same
hypoglycemic effect Jambu seeds has been used and Karavelaka seeds has been used, and the research background for Karavelaka is several studies are there, out of which it lowers the blood cholesterol. And the next is ashwagandha. Already had in depth he has dealt with it. It's got a very good effect on various aspects of controlling the infection as well as for in immunomodulatory effect. So here we have it has got antioxidant effect, especially we are chosen for that, and it has got a neurotropic nature, will help with these diseases, especially anti-infections, and use of ashwagandha for mild antibacterial activity and antioxidant activity. So taken ashwagandha. And then Triphala, that includes Amalaki. We have got a lot of research in this, and Vibhithaki, we have got a lot of research in this, and then Haritaki, we have a lot of research on this. And all these put together, the objective is to revalidate the selected drug from the texts of the ancient texts to the evidence-based medicine. So this is a call of the science now for Ayurveda. From Ayush to Western world, everybody is asking, we want evidence-based medicine for Ayurveda. So with that aim, had to struggle a lot to get this clearance from various aspects to do the study, especially my university board has all the principals of the modern medical colleges who were against this work. So I had to struggle a lot to prove that this is the best work and it's the best medicine, was a gift for the India. Then this has got two studies. One is the animal study, second is the clinical studies. The animal study, I have used albino vista rats in the phase 1, and next second phase is the clinical study, which I have done with the CTRI permission. And then animal studies, I'll just very quickly I'll go through this because I promised time. The aim of the is to determine if there is an acute toxic effects or not, because all the medicines have been mentioned in the text. In spite of it, we wanted to know the combination of these particular drugs may cause a synergetic effect that may cause toxicity. So I've been advised by the interview board to go for the animal studies. So toxicity studies, I have done it with this combination, and to study the effect of hypoglycemic activity, anti-diabetic activity using ceftazotocin injection induced diabetic model compared with the standard drug, that is glibenclamide. So to analyze statistically, each group had a minimum of 6 animals. The number is 3 male and 3 female animals per group. Total of 6 groups of 36 animals have been required. And then the screening method was it has got 3 levels of study in animal study. One is acute toxic studies, second is normoglycemic studies, and third is euglycemic studies, that is diabetes induced rats. So acute toxic studies, the plan was to give the animals this particular dose of herbal medicine, especially dissolved in CMC, carboxymethylcellulose. It dissolves the cellular layer and brings out the contents of the cell so that we can have all active principles dissolved in the solution and can be absorbed. And we are given the dose of 200 mg, 500 mg, 1000 mg, 1500 mg and 2 grams per kg body weight. And in each group administered orally to albino vista rats of either sex, that is 120 to 300 grams, and they were observed continuously for change of their behavior, mortality for 48 hours. The mortality, if any, was noted and all the animals were active, the inference was that all the animals were active and there was no mortality, so the drug was free from toxicity. So next is to see the hypoglycemic effect. We have got a normoglycemic, that is a normal animals without inducing diabetes. How does my drug act to bring down the blood glucose levels? So we have divided the animals into again same 6 groups, that is control group, carboxymethylcellulose suspension water, and group B standard glibenclamide, that is 10 mg per kg body weight, and group C is 500 mg, group D is 1000 mg, group E is 1500 mg, group F is 2000 mg. Then after dosing, blood samples were collected through the retroorbital puncture of the albino vista rats at 0 hour, 1 hour, 2 hour, 4 hour and 6 hours. The 0.5 ml of blood is been withdrawn each time and the retroorbital plexus, and separate serum immediately by centrifuging of 33,000 revolutions per minute for 10 minutes, and for laboratory insulin estimation and glucose estimation and glucose kit for determination of the blood glucose levels and blood insulin levels in the lab. Then the next study was for euglycemic studies, where the rats have been induced diabetes. So for this, as per Trivedi et al., we have done it. We have selected the drugs and given the ceftazotocin injection at the
dose of 60 mg per kg body weight, yes. And then we have the two studies in this, especially euglycemic studies, one short-term study, one long-term study. In the short-term study, we are given the animal on the same day, fasting day, and we have checked the blood sugar levels at 0 hour, 2 hours, 4 hours, 8 hours, 12 hours, and 24 hours. That's 6 times you have taken the blood. It's 0.5 ml, and we have checked the blood sugar levels and also the insulin levels. And then the long-term study was one where we are given the drug on daily basis. Daily basis, 14 days. First day and the last day we have checked and we have compared the results. So this is the long term, that is on first day, 0 day, first day, second day, fourth day, seventh day, and 14th day we have taken the bloods to see the changes of the blood sugar levels and as well as blood insulin levels. The results were given in terms of mean SEM. The obtained results were statistically analyzed utilizing one-way analysis, ANOVA using the computerized graph, and INSTA were 3.05 and were considered statistically significant. That is 0.05. Okay, the normoglycemic studies you can see the changes. That is especially in A is a control, no medicine, nothing was given. B is a standard group with glibenclamide, and C is the group with dose of 500 mg, 1000 mg, and 1500 mg and 2000 mg gradually. We can see the changes of glucose levels from 121 in the last group to 71 it has come down. And the next is we have the A group, glibenclamide is 132 to 85 it has come down. So we can check the comparatively the reduction of the blood glucose level in the animal from 121 to 71. Okay, little bit mathematics here and as well as more of numericals. Then you can see the normoglycemic study blood glucose levels, how it has really come down. Then insulin levels, see the insulin levels in glibenclamide from 12 units, it has gone to 16 units. 16 units, and the same thing in a 0 over 12 units in the minmide drug, it has gone to 15 units. Means there is a variation of increase of number of units in the animal with the drug. So the normoglycemic study insulin levels, you see the graph here, how it increased in each group. Then the bar diagram, we show just, we try to compare it, and we see these changes, that is the reduction of blood glucose levels in normoglycemic studies is 38%, and then the same thing we find in different one. And the hypoglycemic studies increase in blood insulin levels, increase in blood insulin levels, you can see the percentage of increase in each group. And then we have euglycemic studies, again the graph, see how it has come down in short-term studies. Short-term studies we did not find much change, but we got a good change in euglycemic studies, especially in the long-term studies we had a very good change, very good response. That is, in that we have from 269 for a glibenclamide group and it has come down to 175. But whereas my drug 595, it has come to 177 the blood glucose levels in 14 days of treatment to the animal. And then we have the insulin levels, you can see from in glibenclamide from 8 units, it has increased to 11 units, 14 days of treatment. Then my drug, that is from 4 units, it has gone to 7 units. So there is increase of 3 units on 14 days, and this is how you can see the increase of the levels of insulin in the long-term treatment when, especially in the F group compared to the glibenclamide. So histopathology, we have done a histopathology examination. We have taken one animal from each group, that is from control group, test group, and as well as from the standard group. So we have taken the animals, we killed the animals from each group and then taken out the liver and pancreas, and we have gone for the section, and then we checked the section, we gave the sections, we coded them and given to the 3 pathological different groups of 3 medical colleges to study and give the report. So to avoid the bias and confounding factors. So okay, we have done that, and this is the pancreas of, this is the control group. We can see how the pinkness is, compare the pinkness here, and then this is the one with glibenclamide, and this is the one with drug. How strong, how thick it has become, you can see that the deposition of this pinkness is a sign of increased zymogen granules, especially the islet of Langerhans functioning. And then liver control group, we have taken it,
And liver control group also you can see, this is the control group, no medicine. This is the glibenclamide. And then we find especially in liver cells, especially in the test group, you can see the normal hepatocytes well arranged and well organized compared to the glibenclamide group, where it is got inflammatory cell collection is there in glibenclamide group. So this is regarding the animal study. Now we are coming to the clinical study. So to prove the efficacy of Gudichadi as a herbal polyhypoglycemic compound drug in management of Madhumeha, to understand the effect of the trial group on the cholesterol of the diabetes patients. So clinical registration, CTRI registration is this, and the material is we have taken 200 individuals for better results and OPD, and then consent form, etc. info was given. All this has been shared with the CTRI, and the patients were given 10 grams of Gudichadi Churnam with hot water twice a day, half an hour before food, for a period of 30 days, preferably say 7 a.m. to 7 p.m. And objective parameters are fasting blood sugar, blood insulin, post-lunch blood sugar, and blood insulin, HbA1c, blood cholesterol before treatment and after treatment. So we have the regular inclusion criteria, which you all know that, exclusion criteria, etc. So the bar diagram, you can see the reduction of blood glucose levels before and after treatment. See, before treatment, this is blood glucose, and the after treatment, you can see how much it has come down in this all 200 people together. Then bar diagram here, clinical trial of blood insulin levels, you can see before treatment, blood insulin levels after treatment. And the HbA1c impact also, because 1 month, no big impact, but small impact is there, HbA1c. Then blood cholesterol levels, you can see how much it has come down, clinical trial. So this is the p-value is always is a 0.001 for all of the studies, and also we have so correlation studies where we have a very good significance, and then t-test outcomes are also is always 0.001 for all the tests. So the clinical objective and parameters of the study is being established, and we are sure that these medicines put together will definitely act upon diabetes as a beginning of the treatment. Whoever is a new diabetic people, they can use this for a long time without going for the synthetic drugs, so that the final end of the diabetes, most of the diabetes end up with insulin. So that period can be avoided by starting taking this herbal drug. And this herbal drug is cheap, easily available, easily constitutable, can be made by any poor person in India, and very abundantly available throughout the Ganga basin, and we do not have to really snatch or disturb the environmental stability. So I appreciate the opportunity given for me in this opportunity to express one. I think very much within the time. Yes. So thank you so much for the organizers and my Baba Ramdev ji and Acharya ji for this opportunity. Thank you very much, sir. मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया करतल ध्वनि से सर को धन्यवाद देंगे। इसी बीच हमारे मध्य रजिस्ट्रार उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आदरणीय राजेश अधाना सर उपस्थित हैं। मैं सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अच्छा, सर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं Questions, sir? No questions? Thank you so much. Thank you. All are feeling hungry, I know. सर का लेक्चर बहुत ही ज्ञानवर्धक, फ्रूटफुल रहा। हम सभी की नॉलेज सर ने बहुत अच्छे से गिलोय के ऊपर और बहुत सारी मेडिसिन जैसे मधुनाशनी, कार्वेलक, इन सब के हाइपोलिपिडेमिक और हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट के बारे में सर ने चर्चा करी। सर ने हमें गंगा बेसिन में पाए जाने वाले और बहुत सारे प्लांट्स जो कि एंटी डायबिटिक इफ़ेक्ट रखते हैं, जैसे आंवला, हरीतकी, नीम, जम्बू, कार्वेलक, उनके बारे में बताया। सर ने रीवैलिडेशन ऑफ द सिलेक्टेड ड्रग एज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इन एंटी डायबिटिक एक्टिविटी में गिलोय का, गुडुची का बहुत ही अच्छे से सारी स्टडीज़ हम सबके साथ अपनी स्टडीज़ शेयर की। मैं सर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इतना हम सबकी नॉलेज एक्सटेंड करने के लिए। सर ने बताया कि जो सर के अंडर में स्टडीज़ हुई हैं उसमें फ़ेज़ 1 एनिमल स्टडीज़ और फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स भी हुए हैं। सर ने
टॉक्सिसिटी स्टडीज़ के बारे में बताया और सर ने ये बताया कि ग्लेबन क्लेमाइड के वर्सेस में अगर हम इनका कंपैरेटिव स्टडी करें तो गिलोय बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट्स हमारे सर ने स्टडी साझा की। सर ने शॉर्ट टर्म स्टडी एक 14 डेज़ की स्टडी हम लोगों के साथ शेयर करी, जिसमें कि सर ने बताया कि अगर हम गिलोय का प्रयोग करते हैं तो इंसुलिन लेवल इंक्रीज़ हो सकता है 12 से 15 यूनिट और रिडक्शन ऑफ ब्लड शुगर 38% तक सर की स्टडीज़ में पाया गया। उसके अलावा सर ने कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल सेल कंट्रोल ग्रुप सेल्स के साथ पूरी स्टडी हमारे साथ शेयर करी। ये स्टडी क्लिनिकल स्टडी का जो सेकंड फेज़ की स्टडी थी उसमें 200 सैम्पल साइज़ के ऊपर सर ने हम लोगों को बहुत सारे स्टैट्स के थ्रू रिजल्ट्स बताए, जिसमें कि सर ने बताया कि ब्लड शुगर लेवल 250 से 157 यूनिट तक कम हुई और HbA1c गिलोय के द्वारा 8.1 से 6.6 बाद में स्टडी के बाद प्रूव हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी नॉलेज हम सबके साथ शेयर करने के लिए और हम सबका ज्ञानवर्धन करने के लिए। सर के फेलिसिटेशन के लिए मैं आदरणीय रजिस्ट्रार सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया वह सर्टिफिकेट एवं मोमेंटो देके सर को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। की गड़गड़ाहट कम ना करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे नेक्स्ट स्पीकर प्रोफेसर राकेश भूटानी सर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से हैं। मैं सर के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी। Sir is Assistant Professor in Limnology and Ecological Modeling Lab, Department of Zoology and Environmental Science, गुरुकुल कांगड़ी में है। सर का जो थर्स्ट एरिया है वो है इकोलॉजिकल मॉडलिंग, एक्वेटिक बायोलॉजी, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एयर पोल्यूशन। सर ने PhD गुरुकुल कांगड़ी से की है तथा सर की MSc एनवायरमेंटल साइंस में गुरुकुल कांगड़ी से ही है। सर ने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से BSc इन जूलॉजी, बॉटनी एंड एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट से की है। सर मेंबर एडिटोरियल बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव एडिटर ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जर्नल। सर इज़ ऑल्सो रिव्यू एडिटर इन बायोजियोग्राफी एंड मैक्रो इकोलॉजी इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। Sir is member of editorial board of Biotechnology International Journal. Sir is member of editorial board of Journal of Applied and Natural Science. Besides it, there are so many academic memberships like life member of Action for Sustainable Efficacious Development and Awareness, Indian Academy of Environmental Science, founder member of Green Star Nature Club, life member of International Council for Health and Environment. Sir, we welcome you. And I request you to please come on the podium and give your lecture. Thank you very much, sir. I will manage USB portal. Okay, thank you ma'am for a very nice introduction of mine. First of all, I will let you all know that I am from the field of environmental science. I am not from the field of Ayurveda, and because this conference is from Ganga and Ayurveda, and since I am working on river Ganga since last 22 years, so I will not let you know here the research about the Ayurveda or about the research of the Ganga, because that is a different domain, and if I discuss the research about the Ganga, you people get bored. But the talk is important because I will let you know some of the important facts about the river Ganga. We all know in India, we take Ganga water as an Amrit. हम इसे अमृत मानते हैं। अमृत क्यों मानते हैं? Why we
call Ganga water as an Amrit. As my previous speaker has already told that Ganga river basin consists of thousands of medicinal plants. और जब ये गंगा वाटर गोमुख से नीचे आता है तो उन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को अपने साथ लेकर आता है एंड इट हेल्प्स इन क्यूरिंग द वेरियस डिसीजेस. बोथ fields are different, Ayurveda is different, science is different, but if we merge both the field, there are various opportunities to do the research. So I am just here to know all of you that about that opportunities and that all things. First of all, I welcome you all to this campus of Gurukul Kangri, and this is a satellite view of our globe from about 32,000 kilometers height. And I think Hindi fonts are not there. Anyway, I will let you know that these are the various shloks I have taken from the your Ved, Yajurved, Samved, Rigved, and all that Charak Samhita, Sushrut Samhita. That all describes about the water. That is a shlok from Atharva Ved that Apo Hista, Mayo Bhuvasta, Na Urjit Ghatan, Mahe Rakshanam Chakshase. You all know about that. That itself describes that water is the elixir of life. It is a source of energy and governs the evolution and functions of the universe on the earth. So water has very much importance. We all know about that. That has already been told in the these are all the shloks that has been mentioned in Sushrut Samhita and all that books you read, Yajurved, Ayurved. Pure water is like nectar and have medicinal properties that I already told you about in all about that. Bathing in pure water, drinking in drains of impurities of the water cures. Using pure water for a man becomes healthy. All this has been described in that books you read in your during your studies. Okay. That already I have told you that pure water contains energy, nectar, vigor and digestive powers also. तो इसीलिए हम लोग उसको अमृत कहते हैं. अमृत जब हम कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हम लोग मानते भी हैं कि गंगा जल जो है हमारे लिए कितने, हमारे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है हम गंगा जल से ही करते हैं. वाई इज़ इट सो? बिकॉज गंगा जल हैज़ ऑल दीज प्रॉपर्टीज़. वन थिंग आई वॉन्ट टू ऐड, मे बी मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नोज, हम लोग ये सब जानते हैं कि गंगा वाटर अगर हम गंगा जल को घर में रखते हैं तो वो कभी ख़राब नहीं होता. वाई? सबको ये पता है गंगा जल खराब नहीं होता, बट आई थिंक दैट मैनी ऑफ यू डोंट नो द रीज़न. अ स्पेशल काइंड ऑफ वायरस दैट इज़ बैक्टीरियोफेज रिजाइड्स इन दैट गंगा वाटर. और यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं यहाँ पर बताऊँगा. साइंस भी अभी तक ये फेल हो गई है इस चीज़ में. यू नो, जब वो पानी क्या करता है, वो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, जो भी पोल्यूटेंट उस रिवर वाटर में आता है या वाटर में आता है, देन दैट बैक्टीरियोफेज अराइजेस, वो आता है, उस पोल्यूटेंट को ख़त्म करता है और गायब हो जाता है. साइंस को भी आज तक नहीं पता चला ऐसा क्यों होता है. साइंस भी रिपोर्ट नहीं कर पाई इस चीज़ को. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ रिवर गंगा. So these are the different types of water. I think Hindi fonts are not there. And now come to the river, about the river Ganga. We all know that river Ganga flows from Gomukh to the Bay of Bengal. And during this journey of 2,525 kilometers, I think many of you don't know the total distance of Ganga in India. 2,525 kilometers it runs from Gomukh to the Bay of Bengal. So it is a source of the water, the source for many of the cities on the basin of the river Ganga. Why Ganga water is important? Now talking about the Garhwal Himalayas, the Ganga river system, we all know that Ganga river system formed by the two main streams, that is the Bhagirathi and the Alaknanda, that merges in the Devprayag. Bhagirathi and Alaknanda. At Devprayag, the confluence of these two rivers is called as the Ganga. After merging the Bhagirathi and Alaknanda, Ganga forms at Devprayag, which flows down and emerges of the river at plains from Rishikesh, Haridwar and so on. And I already know that according to the Hindu mythology, the king Bhagirath brought down this river to the earth for the salvation of his ancestors. Okay. The Ganga water is colorless, tasty, pure, delicious, cold and disease curer, fit for cooking, digestiveness, quench the thirst, satisfy hunger and enhancing the memory. I am not saying this. Your Ved is saying this. But today, what is the condition of this Ganga water? आज हम
गंगा जल पी सकते हैं। हरिद्वार की बात अगर हम छोड़ दें, हम अगर इलाहाबाद बनारस की तरफ चले जाएं, आई एम डूइंग रिसर्च, अभी मैं आपको यहाँ पर पिक्स फोटोग्राफ्स की फॉर्म में आपको सारे फैक्ट्स दिखाऊंगा। दैट इज़ द वर्क ऑफ माइन सिंस लास्ट 20 ईयर्स। पिछले 20-22 साल में मैंने जो भी फोटोग्राफ्स के, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कोई साइंटिफिक डेटा नहीं दिखाऊंगा बिकॉज वो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो ये हमारे वेद कहते हैं क्योर्स करता है डिसीज़। अगर हम, क्या गंगा जल पीने लायक रह गया है? इलाहाबाद बनारस की तरफ देखें तो क्या स्थिति होती चली जा रही है। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? वी पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। वी आर डंपिंग टन्स ऑफ वेस्ट इनटू दिस रिवर गंगा। एक तरफ हम उसकी पूजा करते हैं, दूसरी तरफ हम उसमें वेस्ट का डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो दैट शुड बी अवॉइडेड टू कंजर्व द रिवर वाटर। This is from Maharishi Charak has said Ganga Jal cures the diseases. You all know about that. And water from the Himalayas cures the heart diseases also. It also cures. That has been mentioned in your all the Vedas. Now these are the some of the shloks that is in the photographs forms. Yajurved and Rigved shows that scientific by the help of the scientific methods or natural methods, passing of sun rays through it, water purifies it. Kusha grass, about the Krusha grass also purifies the water. That helps. That is a shlok that what kind of medicinal plants helps in purification of water also. That has also been described in Ayurvedic literature also. This is the, according to the Bhav Prakash, this is the various classification of water. I think you all people may know, so I am not going towards that, and because we have already got late, I will try to brief my all these. These are the properties of water according to the Bhav Prakash. Rainwater, that is Dhara Jal, torrential water, that is we called it torrential rainwater, and that in your language it is called as a Dhara Jal. Anartav Jal, Karak Jal, Tushar Jal, Him Jal, Bhumi Jal, Nadya Jal. You all know about the importance of that particular water. These are the qualities of other kinds of water. Aushadhi, Nairjhar Jal, Sarush Jal. These all are mentioned in your Ayurvedic literature. I have already taken it from your Ayurvedic literature only, and I have just tried to compare the different names, what is called in the field of science and what has been written in the Ayurvedic literature. According to Vidit Shushruta, water suitable for health, Jal Grahan Samay, you all know, you prescribed to your patients that you just take the water at that particular time, khali pet pani peena hai, that will cures the diseases, that will drains out all the, that will detoxification your body and everything. So these are also other properties of the pure water. Now comes, this is in Hindi, I have given the title Ganga Vardhan ya Abhishap. Hindi fonts are not there in this laptop, but actually this is written as Ganga Vardhan ya Abhishap. Hamare liye kya hai? We have to decide. Now I am going to show you the photographs. Ganga then and now. What is my main motto? I am going to around 98 to 2005. 1998 to 2005, these photographs belongs to that particular region. This was the particular view of that at that time to the Har Ki Pauri and nearby areas of the Ganga river. You just see that water was crystal clear at that particular time. These are the various spots we have covered during our research studies, and I am showing it to you. Now, आज की गंगा, what is the position? आज की तो मैं यहाँ पर इसलिए नहीं यूज़ करूँगा कि because these photographs are 2-3 back year olds and we are compiling the data for next after COVID. We are compiling and I will try to add it on after 5 years that more data in this there. So this data belongs to around 2019 to 2020. All the photographs are there. What we are doing? आध्यात्म के नाम पर अभी गणेश चतुर्थी निकली, गवर्नमेंट ने बैन किया, बट वी आर जस्ट, हम क्या कर रहे हैं? गंगा में मूर्ति विसर्जन कर रहे हैं. हमारी आस्था है, अच्छी चीज़ है, मैं इस चीज़ पे अगेंस्ट नहीं हूँ, बट उसका एक ऑल्टरनेट हम तैयार कर सकते हैं. गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को बोला है. क्या होता है जो मूर्ति हम विसर्जित करते हैं उसमें हम, वी ऑल नो, कोई ऐसा नहीं है, छोटा बच्चा भी जानता है, वी यूज़ कलर्स दैट कंटेन्स द केमिकल्स. वो केमिकल्स उस गंगा में आएगा, उसी गंगा जल का हम आचमन करेंगे. आचमन करेंगे तो वो केमिकल हमारी बॉडी में जाएगा, और हमारी बॉडी में जाएगा तो दैट विल कॉज डिसीज. सिंपली दिस इज़ अ सिंपल चेन.
सो हमें अपने आप को अगर बचाना है, इफ़ वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, देन वी हैव टू अवॉइड सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। अध्यात्म के नाम पर हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी कांवड़ के टाइम पे आप देखिए कितनी भीड़ रहती है गंगा में, कांवड़िए जो हैं फूल है या कांवड़ हैं उसको वो करते हैं। अब आप ये देखिए दैट दीज आर द नेचुरल फोटोग्राफ्स टेकन बाय मी। मेन हर की पौड़ी, अब सोचिए कितना कचरा डेली का अंदर जाता होगा गंगा में। दिस इज़ द फोटोग्राफ ऑफ मेन हर की पौड़ी। होटल्स से, आश्रम से जितना भी सीवर, मैं इसलिए बताया आपको ये बात, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हेयर, ड्यूरिंग लास्ट 2-3 years NGT हैज़ टैप्ड सम ऑफ दीज सीवर लाइन्स। इसलिए मैंने आपको बताया दीज फोटोग्राफ्स आर फ्रॉम 2000 अप टू 2019 एंड 20। पिछले 2-3 साल में ये जटवाड़ा पुल जो हमारा है, हम लोग सब जानते हैं, यहाँ पर गंगा की स्थिति ऐसी हो गई थी, ये हो गया था कि हम वहाँ का पानी पी नहीं सकते थे। बट नाउ द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। रिसेंट स्टडी जो हमारी अभी चल रही है उसमें अभी हमारे को फिर से कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, यू ऑल नो अबाउट द कोलिफॉर्म बैक्टीरिया, द कोलिफॉर्म बैक्टीरियल नंबर एनहेंसेस टू 500 to 1000, जो हर की पौड़ी पे 0 था। ड्यूरिंग 14-15 के आसपास हमें हर की पौड़ी पे भी ई कोलाई जो है रिपोर्ट हुआ था। एज पर द स्टैंडर्ड्स द नंबर ऑफ ई कोलाई शुड बी 0 इन ड्रिंकिंग वाटर, वी ऑल नो दैट। अगर हर की पौड़ी पे अगर हमें ई कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिल रहा है तो लैक्स ऑफ टूरिस्ट कम देयर, कितने लाखों टूरिस्ट आते हैं, कितने लोग गंगा जल लेके जाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जाता है। तो आप सोचिए वो यहाँ से क्या लेके जा रहा है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। तो अभी रिसेंटली वो थोड़ा सा मतलब जो है जब से ये NGT ने टैपिंग करी है, जटवाड़ा पुल पे भी फिगर डाउन हुई है एंड इट कम्स अप टू मैक्सिमम अप टू 100, अभी 100 तक रिपोर्ट हो रहा है अभी भी। दीज आर द डिफरेंट फोटोग्राफ्स आई एम शोइंग। बेदिंग एक्टिविटीज़, वॉशिंग एक्टिविटीज़, कपड़े धो रहे हैं गंगा में, केमिकल्स फिर जा रहे हैं, डिटर्जेंट्स उसके अंदर जा रहे हैं, दैट इफ़ेक्ट्स द, मतलब ऐसा नहीं है, मेडिसिनल प्लांट्स की मैंने आपको बात बताई, रिवर बॉडी के अंदर भी तो फ्लोरा फोना है, उस फ्लोरा फोना को भी तो इम्पैक्ट कर रहा है। अंदर जो फ्लोरा फोना है, जो प्लैंक्टनिक डाइवर्सिटी है, प्लैंक्टनिक डाइवर्सिटी को भी ये डिटर्जेंट्स जाके इफ़ेक्ट करते हैं। एंड जो फूड चेन होती है, अल्टीमेटली उस फूड चेन के थ्रू ह्यूमन बींग्स को ही इम्पैक्ट आता है। ऐसा नहीं है, मैं आपको वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हेयर, दैट इज़ अ साइकिल कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। मे बी यू डोंट नो द टर्म बट आई विल एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट। मैं छोटे में आपको समझा देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम गंगा जल पिएंगे तभी वो हमारे अंदर जो है वो पॉल्यूटेंट जो है वो जा रहा है। बट अगर डिटर्जेंट गया, डिटर्जेंट ने क्या किया, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, एल्गी है, उस एल्गी पे जाके सेटल डाउन हुई, उस एल्गी को जो एमीबा है, पैरामीशियम है, उसने खाया, उसको एक स्मॉल फिश ने खाया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया, एंड फाइनली उस लार्ज फिश को ह्यूमन बीइंग ने खाया। तो क्या हुआ, वो पॉल्यूटेंट वहाँ से भी साइक्लिक फूड चेन के थ्रू बॉडी के अंदर आ जाता है। तो देयर आर वेरियस वेज in which that pollutants enters the human body, तो हमें उससे बचना है। These are the all the photographs that different activities that has been done, bathing activities and all these activities, these are the photographs against that particular washing activities। धोबी घाट बनाए हुए हैं नियर गंगा वाटर। These are the other various photographs, recent photographs है कांवड़ की जो मैं बात कर रहा था आपको। These are the at the time of कांवड़। होटल्स से देखिए डायरेक्ट सीवर जो है वो गंगा रिवर के अंदर एंटर कर रहा है। ये आउटलेट है इनकी, पूरा इफ्लुएंट जो है इनका गंगा में एंटर कर रहा है। ये होटल्स की जो गलियां आप देखते होंगे हरिद्वार के अंदर अगर आप जाएं तो। सो एट लास्ट, दिस इज़ द लास्ट स्लाइड। अगर हम आज की तारीख में नहीं सुधरे तो व्हाट विल बी आवर फ्यूचर, हमारा भविष्य क्या होगा। एंड दैट इज़ ऑल्सो द ओरिजिनल फोटोग्राफ व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू हियर, एंड द क्रेडिट टू दिस फोटोग्राफ गोज टू माई PhD गाइड प्रोफेसर देवराज खन्ना, who clicks this photo on Ganga river in 1991. That is the original photographs. अगर हम आज नहीं सुधरे, हमने गंगा में पोल्यूशन को कम नहीं किया, तो this will be our future. This is the original photograph that has been clicked in 1990 by my guide. So
At last, I want to show, only say that in the form of that particular shlok that जागो प्यारे अब भोर भई, गंगा प्रदूषण अब और नहीं. So अगर हमें बचना है, अपने आप को बचाना है, गंगा को बचाना है और इन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को बचा के रखना है जो गंगा के अंदर आती है, तो हमें गंगा को कंजर्व करना ही होगा, तभी हमारा अस्तित्व बचेगा, तभी हम लोग बचेंगे. सो विद दीज वर्ड्स आई से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली. थैंक यू वेरी मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस काइंडली लेट मी नो. एनी क्वेरी? बहुत बहुत धन्यवाद सर. सर आपने बिल्कुल नए टॉपिक पर गंगा देन एंड नाउ उसके सापेक्ष में हम लोगों का बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि गंगा रिवर के अंदर जो इतना प्रदूषण है उसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं और कैसे हम उसको फिर से वैसे ही संहिताओं में जैसे मेंशन है उसके जैसा बना सकते हैं. सर आपने बताया बहुत सारे आपने कंपाइलेशन किया आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों से, जिसमें कि आपने बताया कि गंगा जल को अमृत कहा गया है, मेमोरी एनहांसर बताया गया है उसके बारे में, इट क्योर्स द हार्ट डिजीज़, ये भी सब आपने बताया. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आपने सर एक हम सबकी जानकारी बढ़ाई कि गंगा जल स्टोर करने के बाद भी ख़राब नहीं होता क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज है जो कि पॉल्यूटेंट्स को एनगल्फ कर लेते हैं. उसके अलावा सर आपने कारणों पे भी बहुत विस्तृत चर्चा की कि हम लोग बहुत सारा वेस्ट उसमें डंप कर रहे हैं जिसकी वजह से रिवर गंगा पॉल्यूट हो रही है. आपने कुछ ग्रास के बारे में बताया जो कि गंगा वाटर को प्योरीफाई करती है. उसके अलावा आपने विभिन्न आयुर्वेद ग्रंथों के अनुसार गंगा वाटर के टाइप्स और क्वालिटीज़ के बारे में कंपाइलेशन दिया. सर ने 2019-20 तक की गंगा की जो स्थिति है उसके रिलेटेड बहुत सारे पिक्चर्स हम लोगों को शेयर किए और सर ने बताया कि जो हम मूर्ति विसर्जन और जो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स गंगा जल में जा रहे हैं. सर ने बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जो फ्लोरा और फोना है इनसाइड द रिवर वो तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, लेकिन फूड चेन के थ्रू अल्टीमेटली ह्यूमंस भी विक्टिम हैं उस चीज़ के जिसकी वजह से अहित सभी का है. तो हमें गंगा के प्योरीफिकेशन के लिए और उसके अच्छे उसमें जल के लिए हम सबको प्रयासरत रहना चाहिए कि हम कम से कम अपनी तरफ से बचाव कर सकें और उसका संरक्षण कर सकें. थैंक यू वेरी मच सर. सर के सम्मान के लिए मैं आदरणीय रजिस्ट्रार सर से अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया वह सर को सर्टिफिकेट एवं मोमेंटो देकर सम्मानित करें. Please give him a huge round of applause. Thank you very much, sir. Thank you. सेकंड साइंटिफिक सेशन समाप्ति की ओर है. अब लंच ब्रेक के लिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि कृपया आधे घंटे के लंच के लिए हम सभी लोग प्रस्थान करेंगे. आप सभी